Hi guys, welcome to EduTap. If there is one subject in the entire RBI Grade B preparation which maximum people do in a wrong manner, that is ESI, economic and social issues. So in this video, I would be telling you how can you prioritize, how can you strategize for ESI so that you can prepare in the minimum time and you can score the maximum marks. तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अगले 10 मिनट बहुत information आपको देने वाले हैं. And before I start sharing this information, I would request you to subscribe to our YouTube channel or join our Telegram channel, the link for which is given in the description of this video. Now, सबसे पहले when we see the syllabi of economic and social issues, सिलेबस देखने में कई बार बहुत छोटा लगता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, एक सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. बट व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, ठीक है, हर वर्ड में एक चैप्टर है. मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. सो दिस वे व्हेन यू स्टार्ट गोइंग थ्रू द सिलेबस, यू रियलाइज दैट सिलेबस इज वेरी वास्ट. और आप जल्दी जल्दी में अगर इसको पढ़ना शुरू करेंगे, यू विल पिक अप सम बुक, यू विल ट्राई टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम दैट बुक, सो दिस एंटायर सिलेबस गेट्स कवर्ड. देयर लाइज द प्रॉब्लम. आपको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता है. अगर आप इन सारे चैप्टर्स को किसी बुक में से वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर एज्यूमिंग दैट दिस विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम. ऐसा क्यों है सर? इन चैप्टर्स को किसी बुक में से पढ़कर why can't we score good marks? The reason is the pattern. The pattern of the exam is such कि एग्जाम में जो स्टैटिक पोर्शन है that is hardly worth 25 marks, whereas most of the questions both in descriptive and objective are having an orientation towards in current. So I would say 75% अगर आपका करंट अच्छा है तभी आप अच्छा कर पाएंगे. So there lies the major problem. Bookish knowledge, reading those chapters from standard books will help you some basic knowledge, but that will not help you to translate your knowledge into marks. ठीक है. So now अभी मैं बताऊंगा कि ESI ऑब्जेक्टिव के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ESI डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, एंड इन बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव यू गेट स्टैटिक क्वेश्चंस एंड करंट क्वेश्चंस, बट द वेटेज ऑफ स्टैटिक इज वेरी लेस. Now, starting with ESI objective, guys, these are the most important chapters for objective. Measurement of growth, fiscal policy, monetary policy, balance of payment, poverty alleviation and employment generation, and sustainable development and environmental issues. These 6 chapters, and maybe you can add on inflation, which is core of economics. I would say that is part of monetary policy itself. These are the very basic chapters or the core chapters which will help you to understand the economics. After reading these chapters, you will also be able to understand any current affairs that comes in magazines or the newspapers. तो ये चैप्टर दो रीजंस के कारण इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, दीज आर द कोर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं एग्जाम में. अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, सो दिस इज द एनालिसिस वी हैव डन फॉर ईच ऑफ द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इन आरबीआई ग्रेड बी. ईयर वाइज यू कैन सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. अगर आप टोटल क्वेश्चंस देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ से 11 क्वेश्चन आए. 11 जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉवर्टी एलिवेशन 3 क्वेश्चंस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज 4 क्वेश्चंस. आई होप यू आर एबल टू सी दिस, राइट? I'll try to increase the font. I am not able to find the option. Let me increase the font if possible. हाँ, ठीक है. तो आई थिंक अभी आप देख रहे होंगे ऐसे ही. इफ यू सी फिस्कल पॉलिसी 7 क्वेश्चंस, मॉनेटरी पॉलिसी हेयर 6 क्वेश्चंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी 5 क्वेश्चंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस 8 क्वेश्चंस, एंड ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट 4 क्वेश्चंस. तो इसी को देखकर मैंने सारे क्वेश्चंस चैप्टर्स आपके ऐड किए हैं. मे बी यू कैन ऐड दिस चैप्टर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बिकॉज 8 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इट, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी. ठीक है, बट ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है. यू कैन रीड देम इजीली. दीज आर द कोर चैप्टर्स विच माइट टेक यू टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. सो अपार्ट फ्रॉम दीज 6 चैप्टर्स, यू कैन ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन industrial and labor policy and international economic institutions. And from social issues, you can clearly see कि कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं. Most of the times it has been 0 in the last 5 years.
ठीक है, तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना इन द सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं एज इन फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट। ठीक है, अभी मैं ये सारी स्टैटिक की ही बात कर रहा हूं इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, दिस इज ऑल फॉर द स्टैटिक। एंड सर कैन आई लीव अदर चैप्टर्स? नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव अदर चैप्टर्स। व्हेन आई एम सेइंग फॉर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड मेनली फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, I by no means want to say कि other chapters छोड़ दो, other chapters important हैं because in descriptive they can ask you question from anywhere, right? Later I'll tell you how to prioritize the chapters for descriptive also, but in nutshell, if you are preparing for ESI objective for the static part, just do the 6 chapters and maybe international economic institutions as I told you in the last slide, but do not leave other chapters blankly. We will discuss more about them in the descriptive part. अभी ESI ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स भी आएंगे जिसमें यू विल हैव रिपोर्ट्स, स्कीम्स, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, राइट? ESI ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली अबाउट स्टैटिक, देयर वुड ऑलवेज बी करंट अफेयर्स ऑल्सो। सो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? इफ आई कम टू रिपोर्ट्स पार्ट, first of all, again, which reports are important? The ones which are related to your syllabus. Now if I ask you that there is a report on construction industry, chemical industry, auto industry, IT industry, are these important for your exam? No, because these are not in your syllabus anywhere. But if there is a report on health, education, human development, gender issues, Indian economy, globalization, blah blah blah, which is in your syllabus, it is very very important. And apart from what is given in your syllabus, reports also related to road, rail, water, housing are important because anyways they are related to human development, so indirectly they are part of your syllabus. और उसके बाद which reports to prioritize? Reports released by international and national organizations. International organizations of stature, भारी भड़कम बड़े बड़े नाम है जो यूनिसेफ, यूनेस्को, IMI, वर्ल्ड बैंक, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड एट अ नेशनल लेवल नीति आयोग, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन्हीं की रिपोर्ट्स में से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फिल्टर आउट द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू सिलेबस एंड द रिपोर्ट्स रिलीज बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर। और ये रिपोर्ट्स को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू शुड नॉट बी रीडिंग दिस रिपोर्ट्स बिकॉज दीज रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी बिग, सॉरी नॉट बुक, बिग। यू हैव टू रीड द समरी ऑफ दीज रिपोर्ट्स। न्यूज़पेपर्स में इन रिपोर्ट्स के बारे में जो भी आर्टिकल्स हैं, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, दैट्स अ गुड समरी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स, व्हाट इज कवर्ड इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो। पूरा रिपोर्ट 200 पेजेस का, 100 पेजेस का, 50 पेजेस का पढ़ने की जरूरत नहीं है। Now coming on to the schemes, guys, schemes कौन सी पढ़नी है? Now there are a lot of schemes which are being released in India since 1990 or 1947, and they are even asking you old schemes. I have seen in exam they have been asking schemes released in 2013, 2017. So sir, what is the criteria till which year I should be doing the schemes? There is no criteria as such. They can ask you even old schemes. The thing is schemes in news. जो भी schemes news में है, मीडिया में है, PIB या हिंदू में जिनका कवरेज आ रहा है, न्यूज में आ रही हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, व्हेन आई से स्कीम्स इन न्यूज, इट डज नॉट मीन दैट दे हैव बीन लॉन्च्ड. A scheme might be in news which was launched in year 2013, but now it is being criticized by a member of parliament. It is being appreciated by Mr. Narendra Modi for whatever reason. तो जो भी स्कीम न्यूज में होगी PIB और हिंदू में, अगर आप PIB और हिंदू डेली स्कैन कर सकते हैं, स्कीम्स वहां से ढूंढ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, I would say there is nothing like that, but that's next to impossible. We are compiling them on daily basis in our scheme step, right? जो कि हम बोलते हैं कि is a one stop solution. तो आप scheme step पढ़िए अगर आप enrolled student हैं, और मैप टू सिलेबस भी कर सकते हैं, ठीक है? जो भी स्कीम आपके सिलेबस से रिलेटेड है उन्हीं को आप पढ़ें, बट स्कीम्स इन न्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. और देयर आर स्टैंडर्ड डायमेंशंस दैट दे आस्क कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, विच इज द लॉन्च ईयर, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न, कंट्रीब्यूशन बाय स्टेट एंड सेंटर, व्हाट इज द एलोकेशन अंडर द यूनियन बजट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स of this scheme, who are the target beneficiaries under this scheme, रूरल हैं, अर्बन हैं, SCs हैं, STs हैं, what are the current developments, whatever is the current development, if there is any current development, suppose some additional amount has been allocated, suppose some additional people have got benefited, suppose this scheme has been extended to one more district or one more state, whatever is the current development, right, that is also important. तो स्कीम सारी नहीं पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है, बट जो न्यूज में है, याद रखिएगा, जो न्यूज में है एग्जाम से 6 months पहले. अब ये देख लीजिए,
अभी ये 2021 का एनालिसिस है, क्वेश्चंस ओल्ड स्कीम्स में से 12 आए थे, 20 नंबर के, न्यू स्कीम्स में से सिर्फ एक आया था. सो इट्स नॉट अबाउट रीडिंग न्यू स्कीम्स, रीडिंग ओल्ड स्कीम्स विच वर इन न्यूज. बाकी यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई वुड टेल यू अ वेरी इजी वे टू रीड यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. रीड द समरी फ्रॉम PIB and PRS. That's it. Make it simple. And one thing regarding current affairs is, please do not read any UPSC magazines for current affairs, especially reports and schemes. It does not mean that they are bad. They are good, but they are mainly oriented towards UPSC. They are not covering things from factual perspective, right? RBI में factual perspective से ही question पूछे जाते हैं. Now coming on to the ESI subjective, guys. So ESI subjective में वैसे तो they can ask you question from anywhere, right? I mean subjective question can be asked from anywhere. But still there are some favorite chapters if we try to analyze the previous year papers: poverty alleviation and employment generation, sustainable development, economic survey, monetary policy, union budget, industrial development in India, export import policy एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. ये यूनिट तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ड अपॉन व्हाट आई एम टेलिंग दिस. सो जस्ट सी दिस. आई जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट अगेन. सो यहाँ पे देखिए, पॉवर्टी एलिवेशन में से इन द पास्ट years 11 questions have been asked descriptive. Sustainable development 8 questions have been asked in the descriptive part. Monetary policy 6 questions. Industrial and labor policy 3 questions. These are the main topics from which descriptive questions have been asked. Export and import policy 5 questions. So this is what I have been telling you here. Poverty alleviation, sustainable development, monetary policy, economic survey, union budget anyway is important, export import policy and industrial development in India. And when it comes to social issues, I can't tell you what is important, because you can see here almost questions have been asked from every topic. Every topic you see here. Right, so it seems like a very equal kind of contribution over the years. I think, and the reason being that social structure in India is a very small unit. Hardly 6-7 chapters are there, and almost every year there would be 2 questions from this unit. तो ऊपर वाले इतने चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे, नीचे वाले सिर्फ 6-7 चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कवर सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया वेरी वेल, so that you can attempt descriptive questions from these chapters, and there is sure 2 questions from these chapters every year. ठीक है guys, so that's it. बाकी economics में काफ़ी questions finance के syllabus से भी पूछे जाते हैं, मैंने देखा है. जैसे there was a question on 15th Finance Commission some years back. Then there was a question on changing trends in globalization after global financial crisis. Now global financial crisis is part of finance syllabus, but they asked this question in economics. Then budget, though this is also part of economics syllabus and also part of finance syllabus, but again this is overlap where question can be asked both in finance and economics from the budget. So guys, I hope you are having clarity now, right? It's very important to understand कि क्या important है, because time is no marks in my opinion. The more time you devote to strategize, the better will be your preparation. The more time you will get to practice and revise later, and that's the key. ठीक है, तो इस वीडियो को 1 नहीं 10 बार देखिए, और 10 बार देखकर अगर चीज समझ आ जाए तो डू कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड लेट मी नो कि सर नाउ आई कैन स्ट्रेटेजाइज बेटर. I will surely clear RBI Grade B. You have to type below this video in the comment section, sir, now I can strategize better. I will definitely clear RBI Grade B. Thank you. Have a nice day.